Assalamu alaikum. Just a revision from the past lecture, and that was mechanism of signal transduction. And here you are, a hormone when it attaches to its receptor, hormone receptor complex is formed just like this. The part of the receptor is an ion channel, and as the hormone receptor complex is formed, the ion channel opens up to allow ions to enter inside the cell. That is one way of doing signal transduction. The second feature is hormone receptor complex is formed. This has got in the lower portion, in the intracellular portion of the receptor, is an enzyme called tyrosine kinase. This enzyme tyrosine kinase acts as an ATPase for some proteins, and here the ADP and phosphate are formed. This phosphate, by the virtue of tyrosine kinase, is attached to a docking protein, and then other steps of the cell's response are achieved. Coming to the third mechanism of action, पिछला आप सारा लेक्चर सुन चुके हैं, लिहाजा बहुत सारी डिटेल में हमने नहीं जाना. The hormone receptor complex, the intracellular portion of this hormone receptor complex, after the hormone is attached to it, activates the Janus kinase enzyme. This Janus kinase enzyme phosphorylates different types of proteins, and the cell's response is achieved. This is called JAK-STAT mechanism. Again, talking about the signal transduction pathway or cyclic AMP and protein kinase A, some hormones, when they form the hormone receptor complex, the inner portion of the hormone receptor complex within the cell membrane is attached to G proteins. This is a G stimulatory protein which will be converted into alpha and beta gamma complexes, यानी split हो जाएगी. This alpha complex will attach to the adenylyl cyclase enzyme which is present within the cell membrane, and this will, the inner portion, intracytoplasmic portion of this enzyme will convert the ATP into cyclic AMP. This cyclic AMP is going to cause activation of the protein kinase A. जो cyclic AMP dependent protein kinase है, इसे protein kinase A भी कहते हैं. So this protein kinase A will then phosphorylate different proteins which are actually an enzyme. In inactive form, when phosphorylated, it becomes an active enzyme, and this is the way it is going to act on the body. So the different consequences of what happens when the cyclic AMP dependent protein kinase is activated. हमने कहा था ना phosphorylation होती है. So active transport through ATP converting to ADP. This is an enzyme ATPase here, and it is involved in active transport across the membrane. Then an ion channel may be opened by the protein kinase A activation. Then an sarcoplasmic reticulum will release the calcium transport. If there is a sarcoplasmic reticulum being activated by protein kinase A, and on the other hand, if it is the endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, it will cause protein synthesis when thus it is activated by protein kinase A. Now the same protein kinase A can activate the DNA transcription to form messenger RNA in the nucleus. The same cyclic AMP can activate certain enzymes which will cause glycogen breakdown. Same protein kinase A can act on another enzyme which will cause lipid breakdown, and same protein kinase can act on the microtubules for transport, secretion and cell shape changes. So प्रोटीन काइनेज ए अगर मसल में है उसका एक तरह का काम है, अगर वो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन वाले सेल्स में है तो उसका दूसरी तरह का काम है, अगर वो लिपिड ब्रेकडाउन वाले सेल्स में है तो इसका तीसरी तरह का काम है, अगर वो सिक्रीटरी सेल्स में है तो वहाँ पर इसका और काम है, और अगर ये सेल शेप चेंजेस के लिए रिक्वायर्ड है तो वहाँ पर इसका और काम है. जो एंजाइम्स वहाँ मौजूद होंगे विद इन द सेल मेम्ब्रेन, उनके ऊपर प्रोटीन काइनेज ए विल एक्टिवेट देम एंड डू द जॉब ऑफ द सेल. Now let's talk about the signal transduction through inositol triphosphate and diacylglycerol. And you see that the hormone receptor complex, when it is formed,
This is the hormone receptor complex. You see that the G protein system is activated and the alpha portion separates from the beta gamma portion. Now this alpha portion is going to act on the phospholipase C, which is present in this phospholipid cell membrane. Now this phospholipase C is an activated enzyme, and now it is an activated enzyme, and it is going to act on PIP2 to form inositol triphosphate plus DAG. इसका क्या मतलब हुआ? PIP2 दो पोर्शंस में स्प्लिट हो गया, inositol triphosphate and DAG, diacyl glycerol. Now this inositol triphosphate is going to release calcium from this sarcoplasmic reticulum, and this calcium is now going to give the cell responses, for example muscle contraction. This calcium can also go to the inactive protein kinase C and give activation of the protein kinase C with the help of diacyl glycerol. So protein kinase C, for its activation, needs calcium that was released by inositol triphosphate, and it also needs diacyl glycerol, and the three together activate the protein kinase C. Now this activation of the protein kinase C now activates other enzymes, and then the cell's responses are achieved. Now in this case, the receptor type involved is G protein coupled receptor in the cell membrane, and the result of the hormone binding to the receptor is pre-existing designated proteins or changes. ये भी पहले से मौजूद था, ये भी पहले से मौजूद था, ये भी पहले से मौजूद था, इनकी designation जो है वो change हुई है, and this is going to give you cell responses. The hormones that use this pathway are TRH, GnRH and oxytocin. Adrenaline वगैरह भी इस pathway को इस्तेमाल करती हैं, but they are neurotransmitters, and when they are acting on the autonomic nervous system, at that time they might use this pathway for some actions. Now another mechanism for activation of the hormone receptor complex is for the steroid hormones and the lipid soluble hormones. What happens when the lipid soluble hormone or the messenger leaves the bloodstream? It easily goes into the cell membrane and then easily goes into the nuclear membrane or maybe through the nuclear membrane pore. Okay? Now it attaches itself to the specific receptor. When the hormone receptor complex is formed, what happens? This hormone receptor complex removes the heat shock protein from the specific portion of the DNA, and DNA transcription starts. When the DNA transcription starts, messenger RNA is formed, and then it is going into the cytoplasm, causing protein synthesis, which is then going cellular response. अब आप ये देखें कि it is going to take a lot of time. So आप ये भी याद रखें कि the lipid soluble messengers do not give instantaneous action for all the cellular responses. क्या कहा है मैंने? They do not give instantaneous reaction to all the cellular responses. These are long acting responses coming through DNA transcription. अभी मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, that is by the way not a part of this process. The hormone that is lipid soluble not only has got receptors in the nucleus, it sometimes has got effects on the cell membrane. The thyroxine increases the adrenaline receptors on the cell membrane, and the actions of adrenaline are increased, and that is a cell membrane response, not this type of response. The steroids again are permissive for the adrenaline, and they activate the activity of adrenaline on the cell membrane, and that is again a direct response and not this type of response from the cell. So this is it. The hormone receptor complex of the lipid soluble messengers does the job like this, and the signal transduction pathway is called hormone response element on the DNA. The receptor type involved is either within the cytoplasm or in the nucleus. Outcome of the hormone binding to the receptor, it turns on the gene transcription. It turns on the
DNA transcription leading to synthesis of messenger RNA and the proteins that were going to give the cellular response. Hormones that use this pathway, all lipophilic hormones, T3, T4, cortisol, aldosterone, testosterone, estrogen, progesterone, vitamin D, all of them are going to act through this pathway. तो अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसको एक क्विक ग्लांस में देख लेते हैं. कैल्शियम इज अ सेकंड मैसेंजर that activates protein kinase C, calmodulin, and other calcium binding proteins. The calcium calmodulin activates the calmodulin dependent protein kinases. ठीक है? The source of the calcium is it enters the cell through plasma membrane ion channels or is released into the cytosol from endoplasmic reticulum, जैसा कि आपने पीछे पढ़ लिया है. Cyclic AMP activates the cyclic AMP dependent protein kinase A and it is a G protein dependent plasma membrane adenylyl cyclase which catalyzes the formation of cyclic AMP from the ATP. इसके एक्शंस आपने बहुत डिटेल में पहले देख लिए हैं. Cyclic GMP activates cyclic GMP dependent protein kinase, इसका नाम होगा protein kinase G and the source is from guanosine triphosphate in a reaction catalyzed by plasma membrane receptor that has got guanylyl cyclase activity. उसका था adenylyl cyclase activity, इसका है guanylyl cyclase activity. Diacyl glycerol activates the protein kinase C and it is achieved when the G protein coupled hormone receptor activates the phospholipase C, converting the inositol PIP2 into DAG and IP3, and that is PIP2 क्या है? Phosphatidyl inositol biphosphate. Done. Inositol triphosphate, जब ये DAG बनता है तो दूसरी जो चीज बनती है वो ट्राइफॉस्फेट है. It releases the calcium from endoplasmic reticulum into the cytosol और इसका सोर्स वही है जो पहले से आप पढ़ चुके हैं. ठीक है जी. So now when we enlisted the different types of chemical messengers, we also talked about cytokines, and now you see these prostaglandins, that thromboxane A2 and leukotrienes. These are different types of cytokines. The leukotrienes are responsible for mediating allergic and inflammatory reactions. The thromboxanes are involved in blood clotting and vasoconstriction. The prostaglandins are involved in vascular actions and inflammation. So we'll see how these are formed by hormone receptor complex formation. So the pathway for eicosanoid synthesis and some of their major functions, we are going to study that. The hormone receptor complex acts on phospholipase A2 in the cell membrane. The hormone receptor complex activates phospholipase A2 that acts on the membrane phospholipids to form arachidonic acid. When going into cyclooxygenase pathway, it is responsible for forming prostaglandins and thromboxanes. When going into lipooxygenase pathway, it forms leukotrienes. So that was in brief, आपके biochemistry में ये detail में है, in brief the description of eicosanoid synthesis or the cytokine synthesis here in the hormone receptor complex pathway. Now once you start the hormone to start acting, it acts on the hormone receptor complex and the signal transduction starts. The effect of the hormone on the cell and the body systems are now seen. But it should not continue for long. It should continue for only the given time. When the desired effect is achieved, that should stop. How does the activity in signal transduction pathways stop? We'll see that. To prevent this overstimulation that can be harmful for the body, the signal transduction pathways are shut off. The key event is the cessation of receptor activation. So the receptor hormone receptor complex जो बना था और जो एक्टिवेट होके आगे काम करेगा, तो की इवेंट जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को स्टॉप करने में वो है cessation of receptor activation. Now what happens when the receptor is no longer bound to the first messenger? या तो receptor
हार्मोन कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक डाउन कर गया है या जो हार्मोन है उसकी रीअपटेक हो गई है। तो अब पीछे जो जहां से रिलीज हुआ था वहां पे रीअपटेक हो गई है, तो अब ये एक्टिविटी नहीं चल सकेगी। दूसरी, और इट सिंपली डिफ्यूजेज अवे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में था ना हार्मोन, तो जब वो डिफ्यूज अवे करके ब्लड के साथ वापस चला जाएगा तो फिर द रिसेप्टर एक्टिवेशन विल बी स्टॉप्ड। और व्हेन द रिसेप्टर इज केमिकली ऑल्टर्ड or internalized, then also the activity of the receptors by the hormone will be stopped. Now we are starting a different topic from the previous discussion that was about the signal transduction. Now we are talking how two hormones can affect each other's activity. Number one is permissiveness. One hormone in adequate amounts permits the other hormone to exert its full effect. So this is the thyroid hormone. When it has to do effect on the fatty acid release, when the thyroid hormone acts on the fat cells, nothing much happens. ठीक है, थोड़े से fatty acid release होते हैं. This is epinephrine. If the thyroid hormone is not present, the epinephrine acts on the fat cells. It should release fatty acids. You see, epinephrine has a good action of causing release of fatty acids, but in the absence of thyroxine, this is the effect that is achieved. When the epinephrine and thyroid hormones, both of them are present, they act on this fat cell, and the activity of the epinephrine that was to release the fatty acids is enhanced by the thyroxine, and this is the achievement. Released free fatty acid released are so much increase in amount with time by the activity of epinephrine and thyroid hormone. ठीक है, थायराइड हार्मोन जो है वो थोड़ी सी फैटी एसिड रिलीज करता है, लेकिन एपिनेफ्रिन ज्यादा करती है. इन दोनों को अगर आप जमा करें, ये इतना इसके ऊपर जमा करें, तो यहाँ अफेक्ट आएगा अगर दोनों का सिर्फ एडिटिव इफेक्ट होता. ठीक है, अगर सिर्फ एडिशन होती, सिंपल एडिशन, तो यहाँ अफेक्ट आना था. लेकिन चूंकि एपिनेफ्रिन के एक्शन को बहुत ज्यादा एनहांस करता है थायराइड, तो इफेक्ट इसके डबल से भी, ये जितना इफेक्ट था उससे डबल इफेक्ट तकरीबन आ गया है, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही आया है. सो आई रीड इट अगेन फॉर यू. परमिसिवनेस, वन हार्मोन इन एडिक्वेट अमाउंट permits the other hormone to exert its full effect. Thyroid hormone increases the number of receptors for epinephrine in its target cells and gives a good response. Now this is synergism. ये दूसरा रिस्पॉन्स है जब दो हॉर्मोन्स एक एक्शन कर रहे हो सेल के ऊपर, एक ही सेल के ऊपर एक्शन कर रहे हो. दे मे हैव कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट टू ईच अदर. द एक्शन ऑफ सेवरल हॉर्मोन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड देयर कंबाइंड इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर सेपरेट इफेक्ट्स. जैसे हमने पीछे थायरॉक्सिन में सम ऑफ सेपरेट इफेक्ट्स देखा, तो दैट वाज स्मॉल, बट जो इफेक्ट हमें परमिसिवनेस से मिला वो बहुत ज्यादा था. अगर बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है, एक्शन ऑफ सेवरल हार्मोन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड देयर कंबाइंड इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर सेपरेट इफेक्ट्स. Synergism results from each hormone's influence on the number or affinity of the receptors for the other hormone. अब आप ये देखें, यहाँ पर एक नॉर्मल ग्रोथ चल रही थी एक एनिमल में, रैट में बैठाई हुई है इन्होंने. ठीक है, अब यहाँ आकर आपने उसको पेंक्रियाज भी रिमूव कर दिया और उसका पिट्यूटरी भी रिमूव कर दिया. What happens? The growth is stopped. Now what you do? You give injection of growth hormone. The growth increases to a little extent. यहाँ पर आपने इंजेक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन देना शुरू किया था, यहाँ पर आपने बंद कर दिया. 50 दिन पे देना शुरू किया, 100 दिन पे बंद कर दिया. तो थोड़ी सी ग्रोथ हुई, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं थी. ठीक है, अब आपने फिर वो स्टंटेड ग्रोथ उसी तरह पड़ी रह गई. अब आपने इंडिविजुअली इंसुलिन का इंजेक्शन दिया. ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपने इंसुलिन का इंजेक्शन दिया और फिर बंद कर दिया. थोड़ी सी ग्रोथ हुई, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकी. सो इंडिविजुअली ग्रोथ हार्मोन and individually insulin have very little effect on the growth when the two together are given. यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर आपने ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन दोनों के इंजेक्शंस दिए एंड द रेट ऑफ ग्रोथ, ये देखें ये छोटा सा, ये देखें ये छोटा सा, द रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीजेस ड्रास्टिकली टू रीच दिस लेवल विद इन
75 days, है ना, 175 to 250, सो दैट इज 75 डेज में इतनी ग्रोथ अचीव हो गई है। एक तो रीजन ये है कि ये एक दूसरे के रिसेप्टर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस है इनका, और दूसरा इफेक्ट पता है क्या है? दूसरा इफेक्ट ये है कि ग्रोथ हार्मोन एक तरह के अमाइनो एसिड्स को अंदर एंटर करवाता है और इंसुलिन दूसरी तरह के अमाइनो एसिड्स को एंटर करवाता है। दोनों जिन अमाइनो एसिड्स को सेल में एंटर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अमाइनो एसिड्स फर्क हैं। तो अब इसके पास पूरे अमाइनो एसिड्स नहीं थे, इसने थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई, इसके पास भी पूरे अमाइनो एसिड्स नहीं थे, इसने भी थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे हो गए, ऑल द अमाइनो एसिड्स वर अवेलेबल फॉर द ग्रोथ एंड द ग्रोथ इज गुड डन। अब ये आपको साइनर्जिज्म समझ आ गया। ये ग्राफ आप ही की किताब में से लिया हुआ है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन के चैप्टर में से लिया हुआ है, और मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ इन द जर्नल एंडोक्रिनोलॉजी, ताकि आप जो प्रोसेसेस हैं, दो हार्मोन्स इकट्ठे कैसे काम करते हैं, उनको अब इस वक्त समझ लें और बाद में इनको कंटिन्यू करें इन योर अंडरस्टैंडिंग। अब जो आप प्रोसेस पढ़ने लगे हैं, दैट इज एंटेगोनिज्म, when one hormone causes loss of another hormone's receptors, reducing the effectiveness of the second hormone. अब इसमें आपके पास, आपने अगर तो पढ़ी है ना एम्ब्रियोलॉजी, देन यू नो इट वेरी वेल दैट प्रोजेस्टेरोन inhibits the uterine contraction and estrogen increases the uterine contraction. So when estrogen is available but the amount of progesterone is increased, the activity of estrogen on the uterus is decreased. How? Contractile activity of the uterus, how it is decreased when estrogen is still present? The reason is progesterone has inhibited the receptors of the estrogen, so that uterine contractions cannot occur even if estrogen is present. इसको क्या कहते हैं? एंटेगोनिज्म, एक दूसरे के काम की मुखालफत करना। तो जब ईस्ट्रोजन का लेवल प्रोजेस्टेरोन से ज्यादा होता है तो एक तरह की एक्टिविटी चलती है यूट्रस में, और जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो ईस्ट्रोजन से बढ़ जाता है तो फिर दूसरी तरह की एक्टिविटी चलती है। दोनों हार्मोन कुछ ना कुछ अमाउंट्स में हर वक्त मौजूद होते हैं। Now again coming to the general endocrinology, down regulation of the receptors can occur as a result of, whenever the activity of a hormone is decreased, the reason could be that the number of receptors of that hormone have decreased on the cell membrane or in the nucleus. ठीक है, रिसेप्टर्स तो जहां जहां हैं सेल मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में, सारों की मिकदारें कम हो सकती हैं। सो व्हाट इज डाउन रेगुलेशन? द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द रिसेप्टर्स अवेलेबल फॉर एक्टिविटी, और उसमें से एक होगा इनएक्टिवेशन ऑफ सम ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर डीएनए पर हीट शॉक प्रोटीन लगी हुई है जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को डीएनए पे नहीं लगने देती, तो फिर दैट इज receptor molecule are down regulated after a certain amount of activity has been achieved by inactivation of that receptor. Then there are inactivation of some of the intracellular protein signaling molecules. सिग्नल ट्रांसडक्शन में हमने देखा था टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी, हमने जैक स्टेट सिस्टम की देखी थी, हमने साइक्लिक एएमपी की देखी थी, हमने प्रोटीन काइनेज सी की एक्टिविटी देखी थी, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट की। तो वो तमाम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जी प्रोटीन्स या तमाम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनमें से अगर उनकी इंट्रासेलुलर एक्टिविटी कम हो जाए, उसको इनएक्टिवेट कर दें दूसरे हार्मोन्स आकर, तो फिर जो जैसे कि जो इंसुलिन है और जो ग्लूकागॉन है, इंसुलिन अगर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बढ़ाती है, तो ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कम कर देता है। ठीक है ना? सो इनएक्टिवेशन ऑफ सम ऑफ द इंट्रासेलुलर प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स will cause down regulation of the receptors. Then temporary endocytosis of the membrane receptor. आपको काम नहीं चाहिए, आपका जो सेल है वो थक गया है, उसको पता है कि रिक्वायर्ड अमाउंट में चीज बन चुकी है, वो क्या करेगा? एंडोसाइटोसिस ऑफ द रिसेप्टर। सेल मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर थे, नाउ दे हैव गॉन इनसाइड द सेल, नो रिसेप्टर्स आर अवेलेबल ऑन द सेल मेम्ब्रेन। आप हार्मोन सिक्रीशन जो है आपकी हुई हुई है, बट इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन द रिसेप्टर। Destruction of the receptors by lysosomes after they are internalized. आपको कौन से डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसेप्टर्स याद हैं? आपको एंटीबॉडीज से जो रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय होते हैं, रेसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, वो याद होंगे माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए। बहरहाल जो एंडोसाइटोसिस जब हुई हुई होती है, तो एंडोसाइटोसिस के बाद जो रिसेप्टर्स हैं अगर उनका लाइसोसोम के साथ एक्टिवेट कर दिया जाए तो फिर वो डिस्ट्रक्शन होती है।
और आखिरी है डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ द रिसेप्टर्स। आपका काम पूरा हो गया है, आप रिसेप्टर्स को बनाने के लिए जो प्रोटीन सिंथेसिस का एक्टिविटी है वो खत्म कर देंगे, तो रिसेप्टर्स और नहीं बनेंगे और हार्मोन आगे काम नहीं कर सकेगा। In each case, the receptor down regulation decreases the target tissue's responsiveness to the hormone और हार्मोन का एक्शन अपनी लिमिट में आ जाता है। Upregulation of receptors and intracellular signaling proteins. Now, if you need a positive feedback reaction for some type of hormone activity, ऑक्सीटोसिन से आपको पता है लेबर में पॉजिटिव फीडबैक होता है, तो उसमें क्या होता है, द स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंड्यूसेस ग्रेटर फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाय द टारगेट सेल। टारगेट सेल ने जाके प्रोटीन सिंथेसिस ही करनी थी ना, आपने देखा था ना प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो रिसेप्टर्स भी तो प्रोटीन्स हैं। तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो वो अपने ही रिसेप्टर्स की सिंथेसिस को बढ़ा देता है द टारगेट सेल। और ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसेप्टर फॉर इंटरेक्शन विद द हार्मोन, के आपके पास जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हैं तो वो जल्दी जल्दी जो हैं वो अवेलेबल होते हैं इंटरेक्शन के लिए, और नए हार्मोन्स आकर उन पर आके लगते हैं और अपना काम करते हैं। तो दैट इज द सेम थिंग, अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स जो हैं वो होंगे इसमें। when upregulation occurs, the target tissue becomes progressively more sensitive to the stimulating effects of the hormone, और इसके अंदर आप ऑक्सीटोसिन और ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग द लेबर उसका जिक्र कर सकते हैं। अब आपने पढ़ लिया जर्नल एंडोक्रिनोलॉजी की, रिसेप्टर क्या है, सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है, दो हार्मोन्स का इकट्ठा एक्शन क्या करता है, डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स कैसे नेगेटिव फीडबैक करती है, अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स कैसे पॉजिटिव फीडबैक करती है। आई थिंक यू हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट दीज। ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, और एक्सक्रीशन कैसे होती है, ये लेवल्स ब्लड लेवल्स को कैसे रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म के जरिए, रेट ऑफ एक्सक्रीशन और रेट ऑफ सिक्रीशन के बैलेंस के जरिए, तमाम चीजें करने के बाद नाउ वी गो ऑन टू द टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। An endocrinal hormone can be secreted in too little amount, and that will produce deficiency effects. The hypo-secretion will produce deficiency effect. If too much hormone is being secreted by some abnormality in the feedback mechanism, then hyper-secretion will show excess of hormone effects. हम थायराइड की मिसाल ले लेते हैं, thyrotoxicosis, फिर hyper-secretion, and myxedema is hypo-secretion. Decreased responsiveness of the target cells to hormone. बाज़-औक़ात आपका जो हार्मोन सिक्रीशन है वो ठीक है, और उसका जो फिर आगे से पीछे से फीडबैक मैकेनिज्म था, जैसे TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो भी ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायरॉक्सिन की सिक्रीशन करवाएगा, और थायरॉक्सिन जब सिक्रेट हो जाएगी तो वो सेल्स में जाएगी। अब सेल्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे, उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो काम नहीं करेंगे, तो फिर सेल्स का जो रिस्पॉन्स है वो तो नहीं आएगा। जब सेल्स का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ये जो चीज़ है ना आपकी हाइपो रिस्पॉन्सिवनेस, ये भी ऐसे ही जाहिर होगी जैसे कि हाइपोसिक्रीशन होती है क्लिनिकली, लेकिन जब आप टेस्ट करेंगे उस वक्त आपको फ़र्क नज़र आएंगे। और जब स्पेसिफिक एंडोक्रिनोलॉजी पढ़नी है, वी आर गोइंग टू रीड दैट। जस्ट नो दैट इफ़ द रिसेप्टर्स आर डिफेक्टिव और इफ़ द सिग्नल ट्रांसडक्शन enzymes after the receptor hormone complex is formed are defective, then features of hypo-responsiveness will be seen. Increased responsiveness of the target cells to the hormone, ऐसे लगेगा जैसे हाइपर सिक्रीशन हो रही है। तो थायराइड की मिसाल हमने ली, वी वर लकी टू टॉक अबाउट थायराइड। इसमें आपके पास एक TSH की, तो हमारा वो है जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है, एक हमारी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि थायराइड रिसेप्टर्स, थायरॉक्सिन के रिसेप्टर्स के ऊपर एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, उससे थायरोटॉक्सिकोसिस आती है। तो दिस इज इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द टारगेट सेल्स टू द हार्मोन, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, एंड दैट इज शोइंग यू इफेक्ट्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो ये भी आपके पास फीचर जो है वो रिसेप्टर लेवल पर आएगा। ठीक है, so these are the different types of endocrinal disorders that you can see in a patient of endocrinal disease. So once again we are going to repeat our features of too little hormone activity. There could be decreased secretion of the hormone,
देयर कुड बी इंक्रीज्ड रिमूवल ऑफ द हार्मोन फ्रॉम द ब्लड, मेटाबोलाइट्स इंक्रीज हो गए हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, तब डिक्रीज टिश्यू रिस्पॉन्सिवनेस, जब रिसेप्टर्स खराब हो गए हैं, लैक ऑफ टारगेट सेल रिसेप्टर्स, वो भी वही बात है, रिसेप्टर्स खराब हो गए हैं, लैक ऑफ एन एंजाइम एसेंशियल टू द टारगेट सेल रिस्पॉन्स, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम खराब हो गया है। इन तमाम सूरतों में यू आर गोइंग टू हैव इफेक्ट्स ऑफ हाइपो of a hormone. Too much hormone activity, this is hyper-secretion of a hormone. अगर होगी तो हार्मोन एक्टिविटी ज्यादा नजर आएगी। रिड्यूस्ड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन, अगर लिवर प्रोटीन्स नहीं बना रहा तो फिर फ्री बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन ज्यादा हो जाएगा और दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस हाइपर इफेक्ट्स। लेकिन फिर ये फीडबैक से लिवर की जो प्रोटीन्स वगैरह है ना वो उनमें और इसकी सिक्रीशन में फ्री लेवल के साथ फीडबैक जो है वो फिर डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन फाइनली हो जाती है, ये कंट्रोलेबल चीज है, ठीक है। और फिर है डिक्रीज रिमूवल ऑफ द हार्मोन फ्रॉम द ब्लड, अगर किसी हार्मोन को किडनी ने रिमूव करना था और किडनी खराब हो गया है, या लिवर ने रिमूव करना था और लिवर खराब हो गया है, तो इसके हाइपर सिक्रीशन के इफेक्ट्स आते हैं। और अभी मैं नहीं बताऊंगी, ईस्ट्रोजन में जाके फिर हम बताएंगे। डिक्रीज्ड इनएक्टिवेशन, अगर हार्मोन की इनएक्टिवेशन के जो आपके पास एंजाइम्स हैं वो अवेलेबल नहीं है तो भी हाइपर सिक्रीशन की एक्टिविटी नजर आ सकती है। डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन, किडनी नहीं है ठीक काम कर रहा या लिवर ठीक काम नहीं कर रहा, तब भी ये एक्टिविटी आपको हाइपर सिक्रीशन ही की तरह नजर आएगी। नाउ आपकी बुक में जो आखिर में लिखा हुआ है दैट इज असेसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ हार्मोन्स के हाइपर सिक्रीशन है और हाइपो सिक्रीशन है या क्या है। पहली बात तो आप ये सुन लें कि जो किट्स अवेलेबल होती हैं हर एक का अपना स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन लेवल होता है, अपना स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड से मैच करके रिएक्शन को वो चेक करते हैं कि भाई ये हार्मोन स्टैंडर्ड के बराबर है या स्टैंडर्ड से कम है, और स्टैंडर्ड को वो कितने यूनिट्स कहते हैं, और बाकी एक्टिविटी को यदि हार्मोन की इतनी एक्टिविटी चल रही है इसका मतलब है कि इतना ये काम कर सकता है। मुख्तलिफ तरीके हैं, आपको जो मैं बताऊंगी वो सिर्फ यही है, एंजाइम लिंक्ड आइसोसॉर्बेंट एसे, ये एलाइजा जो है इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। नाउ दिस इज एंटीबॉडी 1, ये आपका जो जार है ना जो अवेलेबल है फॉर दिस टेस्ट, इस जार के अंदर लाइनिंग में एंटीबॉडी 1 लगाई हुई है। ये एंटीबॉडी जो है ये लाइनिंग के साथ लगी हुई है, अगर कोई हार्मोन आएगा तो वो इसके साथ एक खास एंटीबॉडी 1 अटैचमेंट साइट से वो इस एंटीबॉडी से अटैच हो जाएगा। एक और एंटीबॉडी है जो सॉल्युबल एंटीबॉडी है और वो इस सोल्यूशन में मौजूद है, और वो अगर हार्मोन मौजूद है तो एक साइड पर एंटीबॉडी 1 लग रही है, ऑन द सेकंड साइड एंटीबॉडी 2 विल बी अटैच्ड। Now, when a hormone molecule is attached to antibody 1 and antibody 2, then only another antibody which is attached to the enzyme is recognizing the antibody 2. ठीक है, जब ये एंटीबॉडी 3 जो है इस एंटीबॉडी 1 एंटीबॉडी 2 प्लस हार्मोन के कॉम्प्लेक्स में एंटीबॉडी 2 के साथ अटैच हो जाएगी तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। एंजाइम कब एक्टिवेट होगा, जब एंटीबॉडी 3 और एंटीबॉडी 3 एंटीबॉडी 2 से उस वक्त अटैच होगी जब हार्मोन एंटीबॉडी 2 और एंटीबॉडी 1 ने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। एंजाइम अटैच होगा तो जो सबस्ट्रेट है उसकी प्रोडक्ट बन जाएगी, प्रोडक्ट जो है इसकी कलर आता है, इसमें फ्लोरेसेंट प्रोडक्ट है, और इसकी फ्लोरेसेंस को फिर आप मेजर करते हैं ऑप्टिकल मेथड से और उसको आप कहते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हार्मोन इन दिस वेल। जितने हार्मोन एंटीबॉडी 1-2 कॉम्प्लेक्स बनेंगे उतने एंजाइम एक्टिवेट होंगे, उतनी एक्टिविटी आपको फ्लोरेसेंट की प्रोडक्ट की नजर आएगी। सो दिस इज an indirect method, enzyme linked isosorbent assay, that you see, and this is one method of checking the assessing the level of a hormone in a blood sample. अच्छा, ये सवाल पेपर में नहीं आता, ये सवाल वाइवा में पूछा जाता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एलाइजा। एलाइजा मेथड हैज बिकम वाइडली यूज्ड इन क्लिनिकल एंड रिसर्च लेबोरेटरीज बिकॉज इट डज नॉट यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। सारा दिन जिन लोगों ने चेक करना है उनके ऊपर रेडियो एक्टिविटी चलती रहे तो वो बुरी बात है, इसमें कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल नहीं होते, सो इट इज अ गुड मेथड। मच ऑफ द एसे कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग 96 वेल प्लेट्स, तो वो उसके अंदर वेल प्लेट्स जो हैं उसमें तमाम
एक्टिविटी जो है वो पता चल जाती है और उसकी वजह से आसान है काम। इट हैज़ प्रूव टू बी अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्यूरेट मेथड फॉर असेसिंग हार्मोन लेवल्स, क्योंकि सारे के सारे जो हार्मोन लेवल्स हैं हमारे इनडायरेक्ट टेस्टिंग है, तो इसमें सस्ता वाला और ज़रा बेहतर एक्यूरेसी वाला जो है वो एलाइजा ही है। ठीक है, अब इस वक्त आई एम गोइंग टू स्टॉप। 35 मिनट का आपका ये लेक्चर है, आप चाहें तो इसे ब्रेक्स में 5-5 मिनट का करके सुन लें, चाहें तो 17 से 18 मिनट की ब्रेक में सुन लें, चाहें तो कंटिन्यूसली पूरा सुन के दोबारा सुन लें। नाउ दिस इज अप टू यू, but the lecture has been completely delivered to you, and after this we shall be studying the hypothalamic factors जब मेरी टाइम टेबल में बारी आएगी। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।